lifestyle like them. Whatever all the influencers are wearing, I want a lifestyle like that. So let's hear from all of them what they have to say. I think there should be, of course, Instagram has changed our lives a lot, but there should be balance between when to stop and when to stop. But to be honest, I myself am very into it, so I don't see that, like you should be, like you should restrict yourself from, looking at things there and, of course you should maintain a balance, but, I am in for Instagram. So, hi everyone. ओए अब आई बात यार सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पे क्वेश्चन है और देख लो हमें कोई सुन नहीं रहा सारे मोबाइलों पे सो दिस इज द इम्पैक्ट we can just see it here and we can observe it here. This is the impact. Our lives, as Guruji has said, is like the law of loneliness. This is again the impact of social media. अभी अकेले हो गए हैं सोशल मीडिया के अलावा कोई राह ही नहीं. बर्थडे विशेस सोशल मीडिया, हाय हेलो सोशल मीडिया, किसी की पार्टी पे जाना है यहीं पे अटेंड, यहाँ की इवेंट की फोटोग्राफ्स ओनली सोशल मीडिया. Nobody is there to, nobody is bothering even to listen, right? This is social media. So this is the impact. Cool. So we can see clearly क्या social media का impact हमारी lives पे. So at this very interesting question that social media is all about real life. So how do you manage your real life and your real life? First of all, hi everybody. It's so wonderful to be here and आप सबकी इतनी amazing energy देख के we are all so happy to be here. Thank you. So talking about the real life and the real life, of course I believe it is very, very important to keep the balance. The word I would say is balance. So obviously a real life is not real life. There is a huge difference. Just like how actors perform in front of the camera life is absolutely different, and once you come back home, you are not an actor anymore. अगर आप अपनी मम्मा के सामने हीरोइन वाले टंटे मारोगे, she be like चल तो actor होंगे आप दे set पे, not at home. So that applies for every profession, I believe. आप कोई भी काम करते हो, you're a doctor at your work, at your hospital, but not once you come back home, right? So I believe there has to be a balance. That is how I would compare real life and real life. My name is Ashleen. Hello everybody. Okay, so I'm into fitness since 2 years. I have to manage like my real life. Like as she said, we have to maintain a balance. Like I made fitness into a part of my life. It is my lifestyle now. I dress according to the occasions, I can say, and yes, these both should be in balance. You can't create imbalance in between them. So yeah, that's correct. Okay. Sorry. So I have a follow-up question for the layman जिनको थोड़ा social media के बारे में नहीं पता है इतना, influencers होते हैं पर पैसा कहाँ से आता है, मतलब how do they get paid? So you get paid for. So okay, this is a very good question. When I also started working, I started working as a social media marketer. Like I used to handle लोगों के accounts manage करना simple language में. कोई मेरे को बोले, कोई brand बोले, हमने clothes बेचने हैं, तो आप हमारा account manage करो. So of course मैं account manage कर रही हूँ, एक service provide कर रही हूँ. I am giving them a photo shoot, their page layout and so many other things. But जब कोई influencer होता है, so for example this outfit which I am wearing today is by XYZ brand. If I come here on the stage और मैं announce करूँ, इस ब्रांड ने मुझे ये आउटफिट दिया है, अगर आपको पसंद है तो मेरी स्टोरी में एक लिंक है, आप जाओ एंड शॉप करो. सो द ब्रांड गेट्स बिजनेस फ्रॉम देयर, राइट?
सो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपने कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है. अगर आपको मुझ पे पहने हुए इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, आउटफिट अच्छा लग रहा है, so go and shop from that brand, and that brand is paying me. There are different modes of payment and different types of collaborations. कुछ brands आपसे collaborate करेंगे, बोलेंगे per outfit आप जितनी मेरी सेल होगी per outfit I'm going to give you. It's on revenue sharing basis. And कुछ brands मेरे को बोलेंगे अच्छा आप post डाल दो, I'll give you 5,000, 10,000 और मेरी reel बना दो, we'll give you 20,000. You know, this is how influencers make money. More the number of followers, of course you can charge more. Yeah, and also it's not always about followers. You need to know how to carry the outfit, carry XYZ, whatever. It could be any product, not just outfit. It could be anything. So influencers get paid for putting up everything on. I mean, whatever they post, be it a story, a post, a reel, they get paid for each and everything. So this is how influencers make money. So when you guys started, it is obviously not very supportive since we guys are in a line. जो not many people know about it. जब हम start करते हैं, not families that know of it. So when you guys started, what were the difficulties you faced? मैं ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ okay, not social media, but I spoke to my dad and mom about acting. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ I was in class 11th I think, मैं अपने पापा कोल गई. पहला obviously it was always a childhood dream, actresses ਨੂੰ TV ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ enact ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ 11th class ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ TV ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, I want to be an actress. He's like ਚਪੇੜ ਖਾਣੀ ਆ ਤੂੰ. So that was the very first reaction because मेरी family background में nobody was into acting, like nobody. I'm the first person from my family who has come into this business. So I never had a legacy. It was मैंने जितना भी अभी तक achieve किया है अपने दम पे किया है. So thank you. First reaction ये था, but obviously with time my parents, my dad, my mom, everybody started supporting me. And आज की डेट में अगर मेरा कुछ भी रिलीज होता है, the first person to look at the video, the first person to share it on WhatsApp and everywhere is my father, because now he's proud of me. I started with the first music video, which was Jaan by Happy Rai Koti, and आज की डेट में I have completed 500 music videos. So, which is actually a deal, I believe, and it is only possible because my family, my father, my mother, and everybody else in the family has supported me. So, I'm very, very thankful, and I believe the family support is very, very important and necessary. See, difficulties. This is a very beautiful word. Huh? मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਯੂ نو ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਓਕੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ. ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ نو ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਡੈਡ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ. ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯੂ نو ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟੀ. ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਲਾਈਕ है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ बस देख तू बस कामयाबी हाथ है, अभी पहुंच गए हैं, पास ही हैं और एक दिन ये होगा एंड योर वाइफ सेज पापा मेरे तो ना संभल नहीं रहे तुसी सामने, ठीक है? देन यू हैव योर चिल्ड्रन एट होम एंड व्हाट दे विल से पापा you always talk about my time and you are always on head, where is our time? So this is again a difficulty. So this difficulties like it starts from your home
ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਪੈਨਲ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਬਟ ਯੈਸ when you have to achieve something you have to fight yourself, not others। तो अपने आप खुद नाल लड़ाई है, किसी नाल लड़ाई नहीं। I have a question. So in Ludhiana or when we talk about North Indian market, तो जो tangible products होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है as compared to services। So I would like to direct a question to everyone कि do you think sometimes your services in your last questions are underrated by other people or clients or sponsors or brands कि ये देखो आप ये प्रोडक्ट कर रहे हो, चलो साथ में ये भी कर दो, थोड़ा थोड़ा ये भी कर दो और स्लिप इन कर करके ये भी कर दो। एंड डू यू थिंक ये वर्क कल्चर इम्प्रूव हो सकता है या कितना टाइम लगेगा इस वर्क कल्चर को इम्प्रूव होने में कि व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट वैल्यूइंग द सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड? You want to say? So I think this problem comes when you don't define your deliverables. So initially when I also started working, अच्छा मैम आपको हम 15,000 पर मंथ देंगे, आप हमारा पेज मैनेज कर लो। हाँ जी ठीक है, परफेक्ट है। वो 15,000 में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने पेज तो मैनेज करना है। अब कल को मैम फोटोशूट होना है तो आप फोटोग्राफर को भी खुद पे कर दो, मॉडल को भी पे कर दो, मैंने क्या बचाया? You know, like I started questioning myself, like what are we doing, like as an agency, what are we delivering and what are we getting? So with time, now I have all my systems set, I have my proposals set, that this is the with time also कि अच्छा ये deliverable add होना चाहिए, ये subtract होना चाहिए, ये भी एक demand हो सकती है, आपको पता ही नहीं होता है, then you get to know okay now मैं deliverables में मेरे सब defined है, so this is the X amount that I'm going to charge and ये मेरे defined deliverables हैं। इसके beyond now I have also become very professional। कल को मुझे कुछ भी demand आती है, कुछ भी मैम प्लीज ये कर दो, sorry sir this was not promised from our side, we have a vendor for this, I can share the contact details, I mean he or she will be more than happy to help। I mean it's very important to have the clarity between, I mean now with all my clients I'm very happy that we have the clarity that we've defined our goals and I don't face this problem anymore। अब ये problem आती है तो only from known people, from friends and family, जिनके pressure में आके sometimes you have to do also and I'm happy doing also। So again it's about balance, where to stop and where to do more। Yeah. So I'd like to say something. How many of you all know a very famous Punjabi female singer called Gurlaze Akhtar? Obviously, everyone. She sings with Karan Aujla, she sings with Sidhu Moosewala, she sings with I think every good singer of Punjab। So एक दिन मैं उन्होंने नाल set पे बैठी सी in the vanity van and generally गल्ला गल्ला करते she's like Akanksha हुन मैं जदों studio जानी आ for singing ते singers जिन्हां दे नाल she does duet songs ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। तो she is like right now you're looking at कि ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਣਾ, but what you're not looking at is the 15 years of struggle that she has done before reaching this point। So the point is कि you pay me for the struggle I have done for 15 years to reach here कि मैं अद्धे घंटे 1.5 लाख रुपया लेके जा सकती हूँ। So this answers the question I believe। Yeah। Thank you। Very देखो बड़ा प्रैक्टिकल जो आंसर दूंगा। When each one of us starts, nobody believes us। The vision we carry is only ours। We know what we are going to do, nobody else। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾके से किसी ਨੂੰ presentation देवांगे in the beginning, people will say हाँ तू करके तो दिखा, है ना, चल पहला तो free कर दे, तू दिखा तो सही। So it is all demand and supply game, because we don't have demand but we have full of supply, So what you have to do is just give them and make their ego satisfied।
एक बार कर दो 10 20 30 40 50 क्लाइंट्स हाथ को बाहर यू नो व्हेन वी हैव ऑन बोर्ड योर डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है बनना शुरू हो जाएगा योर डिमांड इंक्रीजेस योर सप्लाई डिक्रीजेस द मोर योर डिमांड इंक्रीजेस योर सप्लाई डिक्रीजेस that is the value you start that is the value you start getting so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ yourself we know our value but yes we have to compromise in the beginning because this is the only format as she said that this is all struggle Raman also said that she is perfectly fine that ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ but you have to always define your own value then ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਚ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਵਾਂਗੇ 1000 2000 5000 ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਣਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ so this is how this works This is so true. Whatever everyone said, कि difficulties आती हैं. Plus we are into this market जहाँ obviously people demand free work, trial दे दो जी, reel बना कर दिखा दो, है ना? Just come once, देख लेते हैं, बैठो. They waste our time. They tell us to come to the meeting and then say अभी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, है ना? मतलब they are very right about it. Difficulties always come, but obviously once you have reached that level, you do not face it anymore. So. With this, our general questions end here, and now we'll move on to the specific questions. We'll start from Ishmi. So, yeah. So, what was your journey? As you have reduced a lot of weight, guys. You need to see her profile, and then you'll know that she has reduced a lot of weight. आपको पहचानी नहीं जाएगी. And you are a biggest youth role model for everyone. So what message do you have for them? And what was your journey like? Okay, so basically, to be honest, I was 83 kgs 2 years back. I was so fat, less confidence, I would say. And now I have reached to a fitness level of goal. Like I can say I'm fit. Like I can influence people. I have influenced many people. I get a lot of DMs every day that you are an inspiration. Like I can say that something came up. It was my New Year's resolution कि यार मैंने 2020 से start करना है और I have to do it. जैसे मर्जी करूँ करना है. And I did it. और जब स्टार्ट किया था it was not at all decided कि I will be a influencer or a blogger. Nothing was in my mind for being an influencer, influencing people towards fitness, making healthy recipes, like using healthy ingredients to feed myself, my body, actually. So yeah, this was a really good experience for me. So coming up to the next question, do you think social media has impacted the way of your living? And if you think it has, then in a positive way or a negative way? In a positive way, because it has grown up my confidence. I would say I was an introvert. I was totally an introvert. I didn't used to talk to people much. I was a person sitting in a room alone watching Netflix. True. And it's making videos, making informative videos, providing information regarding fitness, regarding food, regarding exercises, regarding how to plan according, how to plan your muscle weekly, you can say. So yeah, it has impacted me a lot. So it's good. So do you think your friends and family have been very supportive with the way of your life and living, with the food you eat or what lifestyle you have? Yes, actually, my family supports me a lot. My father is always यार इसने reduce किया and I have a little sister, real, and she's always she's healthy, chubby. So she's मैंने भी करना है यार, but she's foodie, मैंने खाना है, मैंने ये भी जाना है,
I want to go to EB, I want to have CBT and sandwiches, coffee. Okay, I have everything, but it's like you have to maintain a balance. So yes, family was supportive, and yes, friends are also supportive, but you can't say who is your friend and who is your enemy. I can say that. Uh, so just to wrap it up, just one last question. As we're discussing social media here, do you get bored of it? I don't get bored of it, but yes, I get like ना कि यार बस आज दिल नहीं कर रहा कुछ डालने का आज क्या डालूं I have a lot of content like lined up weekly, but it's like unrealistic because I'm doing MBA. I'm an MBA student, so I'm a student also. I have to balance my Instagram also, so it's quite difficult. But yes, of course, you have to do something if you want to get something, if you want to achieve something. So yes, we have to do it. Thank you so much. Thank you so much. So now we have Ms. Raman here. So my first question is, if you get a chance. So as I already told everyone that she loves travel. So if you get a chance to start a career in one of the countries you have already visited, which would it be and why? Okay, so first of all, I mean, this is not an option for me. My husband's business is here, and we are typical, Indian nadis. So, हमें जहाँ हमारा पति वहीं पे हम. So, मेरा पास ये option नहीं है. But if I had this choice, तो मैं फ्रांस जाना चाहूँगी. Why? Because for आप सबने देखा होगा Emily in Paris. I'm highly impacted by that show. The fashion, it's a fashion capital, and then social media, a lot of PR agencies there, a lot of beautiful locations to shoot. You can do nice reels and all. So yeah, definitely will be France and Paris or south of France, Nice and all. I love French Riviera, so that is me. Everybody is influenced by Emily in Paris. मैं कवर लेने लगी थी ऐसे. So, how do you cope up with brand commitments and what is the importance of networking in the age of social media? Okay, so brand commitments, first of all, like I told you earlier also, we define our deliverables. Then I have a very, very good team. I'm in touch with, and they help me a lot, and my husband helps me a lot. He's worked with a consultancy, and he's made all the formats of how to deliver, क्या आपने commit किया, and उसको promises को कैसे पूरा करना है, and then weekly, we do review meetings, we do reports and all. So this is how we, match the commitment levels of our clients. And the second question was, what is the importance of networking? Networking. I think आज की डेट में सब कुछ ही networking है यार. If you don't know people and people don't know you, then what's the point? I do a lot of events. I need to have people, at my events. अगर यहाँ पे भी, for example, you must have, if you knew me, that's why I'm here. So networking is the key these days. So for you all also, try and meet as many people as you can. Try to connect. Even if you see a speaker coming to your college, try to be in touch with that speaker. You never know कल को कहाँ जाके कब कौन आपको काम आएगा. Try and build your network from now on. It's very, very important. So as you've already said, what is the advice? I hope they are all youth, they are all teenagers. They must be, इनमें से कोई तो कोई होगा influencer, budding influencer, aspiring influencer. So what is the advice that you have for them? Don't be afraid. Just go for it. Just start today. I also started one day. I did not think twice before starting. Just go for it. That's the only requirement. आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको कोई महंगा फोन आईफोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Just start, go for it. Everything that you will do will come across your path as a new learning experience. Just go for it. That's the only advice that I have to give. You said it very right कि we always talk कि यार ये चाहिए, यार वो चाहिए, यार पैसे नहीं यार ये चाहिए. But she said it very right कि कुछ नहीं है, start and then you'll grow. You will see people coming to you and helping you. This universe is so beautiful that there are a lot of people जो आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे ये मेरा ऐसा कर दो, मेरे को ये है, मेरे पास ये है, why don't you use this? I had a lot of people helping me, so just go for it, just start today.
That's the only advice that I have. Thank you so much. Thank you so much, Ramona. So now we have Akanksha Siri. So there are a lot of songs that you've done, but out of them, which one holds the most special place for you? As of today, the most special place would be TGC by Kaka. As you said, it's your favorite as well. Because that song gave me a lot of recognition, I would say, a lot of recognition. Like, TGC करने से पहले I used to go to places, अगर मुझे 10 लोग पहचानते थे, तो after TGC 50 people started recognizing me. So that particular project genuinely gave me a lot of recognition. So that is my personal favorite. Yeah, that is very nice. So, for like you have been in this industry for like around 7 to 8 years. What's your biggest learning? My biggest learning being in this industry is to be patient. I'd like to give this piece of advice to all the girls who are aspiring to be, especially in this industry. मैं किसी और प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर सकती, कोई एडवाइस नहीं दे सकती, वो सही भी नहीं होगा. मैं I can only talk about the profession I am in. So related to this profession, if any girl wants to get into this, my only piece of advice would be to be very very patient and to always follow the right path. मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जब उनको लगता है कि मैं नई हूँ या जिन्होंने पहले ऑलरेडी काम किया भी होता है, उनको लगता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लग गई है. This happens in every profession, not only in acting. अच्छा 4 महीने से काम कम है या anything, even if you're starting new. So I have seen a lot of girls who like become desperate and they start following wrong paths. I wouldn't like to name any, but I'm just generally saying कि कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए. You should always follow the right path. आराम से धीरे धीरे चलते रहो and just have confidence in yourself. And one day you will definitely be there. Yes. Definitely be there. Just have confidence in yourself. Slow and steady wins the race. Yes. Advice. So, tell us how social media has boosted your way of living. So social media has boosted everybody's way of living. I think earlier, even for actors, it was like सिर्फ जिस दिन हमने महीने में 5 दिन शूट करना है तो उसी दिन हमने ड्रेस अप होना है, मेकअप करना है, हेयर करने हैं. It was always like that. But ever since we have TikTok or Instagram Reels and all of this, it's actually become like कि हमें रोज कुछ ना कुछ करना है because you need to cope up with what's happening around. You know, you always have your contemporaries who are like posting more than you, and then you feel okay, I shouldn't be left out, so I genuinely need to cope up and I need to put up with this. It's not nowadays, it's not only about the work you are doing as an actor in front of the camera, it's also about coping up with social media, because अगर social media पे reach होगी तभी आपको काम मिलेगा. Even in my industry, कोई भी singer अगर मेरे साथ काम करने के बारे में सोच रहा है, सबसे पहले बोलेगा अच्छा आकांक्षा श्री इन्हों दा Instagram देखियो, अच्छा इन्ने followers are 460k, okay then we can think about it. So इन्हों दी reach बढ़िया, इन्हों दे किन्ने likes आ, किन्ने comments आ, because these things genuinely matter. आज की date में it is very very important. So it is very important to cope up. Along with acting being your profession, do you consider it to be your passion as well? And what do you think is most important to cope up with social media life? Acting became my profession later. It was earlier only my passion. So when I started off by going and participating into a beauty pageant which was Femina Miss India, and I won the title of Miss Chandigarh 2014. So it was only out of passion. मैं उस टाइम पे कुछ नहीं सोच रही थी मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को कमाना है, कुछ नहीं. मैं आज की डेट में भी सोचती हूँ मेरे से पैसे ले लो मेरे को. I do not want money. I do not run after money. I only run after good work. So I think अगर आपके जितने भी फैंस हैं, मैं नहीं कहती आपके लाखों मिलियन बिलियन फैंस होने ज़रूरी है. अगर आपके 10 फैंस भी हैं ना जेन्युइनली जो दिल से आपको प्यार करते हैं, अगर आप उनके साथ भी in touch रहोगे and you respect their feelings, even if today one person comes to me and he tells me आकांक्षा मुझे उस गाने में आपका काम बहुत अच्छा लगा था,
I would never, give him a ठंडा जा reply, oh thank you, okay and चले गए. No, I'll genuinely be like, thank you so much, because मैंने पैसे के लिए नहीं, मैंने सिर्फ इस चीज़ के लिए काम किया था कि एक दिन आप मेरे पास आके बोलो कि genuinely मुझे आपका काम अच्छा लगा था. That matters to me. So I did a song by Roshan Prince. तुसी सारे ज़रूर देखियो. It was called दिल डरदा by Roshan Prince. बहुत हिट भी होया सीगा. एंड आज की डेट में भी उस गाने को रिलीज हुए आई थिंक 5 इयर्स हो चुके हैं. एंड आज की डेट में भी मेरे पास लोग आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. दे लाइक जब भी हमने वो वीडियो देखी थी या आज भी देखते हैं तो हमारा रोना निकल जाता है. आपका एक्ट बहुत अच्छा था. सो वो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी अर्निंग है. दैट इज द बिगेस्ट अर्निंग ऑफ माई लाइफ. सो दैट मैटर्स टू मी. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So now we have Mr. Kaval Chhabra. So, being working in this industry for over 2 decades, tell us what is your biggest success? यार कितना अच्छा लगता है, माइक ऊपर आता है सारे चुप हो जाते हैं. हाँ. The biggest success is happiness. Yeah. सरदार की शक्ल पे दिख रहा होगा बंदा खुश बड़ा है. Yeah. Right? Right. So biggest success is happiness. Happiness comes from whatever you do from your heart. Don't listen to anyone. Do whatever your heart says. Second, अच्छी चीज खुशी के साथ साथ सक्सेस में क्या है? We are generating passive income. घर में बंदा सो रहा हो और पैसा बन रहा हो, इससे ज्यादा मजा क्या होगा? है ना? इससे ज्यादा मजा क्या होगा? अभी यहाँ कोई है जो सोते सोते पैसे बनाना चाहता है? कोई है? सारे, एवरीबॉडी. अरे इसमें भी कंजूसी है, हाथ खड़ा करने में. ना आपका की करना है, मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं. ठीक है. थर्ड इज आई एम अ फुल टाइम हस्बैंड, अ फुल टाइम फादर, अ फुल टाइम सन, एंड सबसे पहले I have full time for myself. Then, by God's grace, I have got the best team. I have got leaders in my team. I have got the best team. My teammates are like, I really love them. बस मैं चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं वो भी कर देता. They are the best people I have got. So this is success. If you are happy, you have all good people around you, you have people enjoying with you, means you are successful. So money doesn't matter. वो भी बहुत है, ठीक है मतलब, but this is something you need to have, success, happiness. So, अब आपने बोल ही दिया है कि सोते सोते पैसे कमाना है, पैसे कमाना है. So would you like to tell something more about passive income and how everybody here can maybe make some passive income or maybe know about it? अरे अगर सारे ही सो गए तो मैं कैसे पैसिव इनकम कमाऊंगा? ठीक है. तो पैसिव इनकम इज वेरी इजी. इट्स वेरी वेरी सिंपल. उसके लिए एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू वर्क. इफ यू वांट टू जनरेट मनी फॉर नेक्स्ट 10 years, so for next 2 years you have to work for your 10 years. Like we worked 18 hours a day. Then right now we are enjoying that. Passive income के लिए content is the biggest game for now. Next, artificial intelligence and metaverse is coming up. So what metaverse is, you need to understand that. But उससे पहले जो सबसे आसान काम है, मतलब सब कंटेंट वाले बैठे हैं, सबने कंटेंट की बात की है, तो कंटेंट बनाओ. जो भी आपको आता है, whatever USP you carry, आपको हंसना बहुत अच्छा आता है तो उस पे कंटेंट बनाओ. अगर कोई रो अच्छा लेता है तो वो भी कंटेंट है, लोग उसको भी देखना चाहते हैं. कोई एंटरटेन कर सकता है तो कंटेंट है, कोई कॉमेडियन है तो कंटेंट है, कोई उठ रहा है तो कंटेंट है, कोई बैठ रहा है तो कंटेंट है. यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे लोग कंटेंट है. मतलब मुझे तो मैं इतनी देर से ये ऑब्जर्व कर रहा था, सिर्फ कंटेंट दिख रहा था. बेचारे मॉनिटर सबको कह रहे हैं चुप 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 चुप. पीछे से 2 बच्चे उठते हैं, चुपचाप जाते हैं, ट्रे लेते हैं, चुपचाप आके बैठ जाते हैं, भूख लगी है. तो दिस इज अगेन अ कंटेंट. If you capture this, you observe people, you cater that content, just serve it to public. Simple. लोग देखना चाहते हैं, उनको दिखाओ. इसके 2 प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, फेसबुक एंड यूट्यूब. इंस्टाग्राम पे भी रेवेन्यू
इंडिया में शुरू नहीं हुआ आपके कंटेंट पे रेवेन्यू जनरेशन, बट यस इट इज गोइंग टू स्टार्ट सून. वी हैव 7 मोर ऐसे प्लेटफॉर्म्स कमिंग जो लाइन में है आफ्टर यूट्यूब एंड फेसबुक. सो जस्ट पोस्ट योर कंटेंट ऑन यूट्यूब, अपने चैनल्स बनाओ, फेसबुक चैनल्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे वायरल हो. फिर मतलब ये तो बहुत ही सौखा काम था, जैसे ये मैम बोल रहे थे कि मैं तो पे भी कर दूंगी, मेरा तो कहानी करोगे, अच्छा लाओ फिर दिस इज अगेन कंटेंट. मतलब फेमस होने के लिए बंदा पे कर रहा है तो बस फेमस हो जाओ, कंटेंट बनाओ, दैट्स इट, एवरीबॉडी इज गोना पे यू. सो मतलब जैसे आपने कहा कि इट इज ऑल अबाउट कंटेंट, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि अपना यूएसपी फिगर आउट करो. सो इन इंस्टाग्राम में सेट करना नीश फिगर आउट करो. आई हेल्प टीच इंस्टाग्राम एज वेल, आई टीच इंस्टाग्राम. सो मतलब मेरी लैंग्वेज में यही कहते हैं कि अपना नीश फिगर आउट कर लो इंस्टाग्राम का, एंड देन यू कैन पोस्ट अबाउट इट. यूएसपी यस. USP, yes. So, the next question. How do you think that Gen Z can start earning from social media? मतलब, although you have already covered, but do you think that there's something that you can tell more? अभी जेंजी तो सारे सामने बैठे हैं. अभी अगर उनको पैसा कमाना है तो वो बताएंगे, पैसा कमाना है तो हम सिखा देंगे. Is like Gen Z really wants? Guys, ध्यान से सुना. He is the person जो तुम 500 के 500 को जॉब दिलवा सकता है, काम दिलवा सकता है. ध्यान से सुना. I would simply say be your own business hub. The best job is be your own business hub. Start creating content. पहले आपने लव्स की ऐड देखी है टीवी पे? वो निर्मा वाली देखी है? मतलब हम तो बेचारे बुजुर्ग 80 वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं, मतलब हम तो मिलेनियम हैं, बट हमने तो जेंजी को भी देखा. हमारे टाइम पे तो सिर्फ टीवी होता था या न्यूज़पेपर्स. मतलब अभी तो सोशल मीडिया है. जितना बड़ा बजट पहले टेलीविजन को जाता था, जितना बड़ा बजट पहले न्यूज़पेपर्स को जाता था, दैट इज स्लोली ट्रांसफरिंग टू डिजिटल मीडिया. सो दैट मीन्स सारा पैसा आने वाले टाइम में वाया मेटावर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है. स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू आर गोना अर्न बिग. अब सर आपने कंटेंट का तो बता दिया. He has guys 150 properties just like Ludhiana Life. Ludhiana Life is one of them, and he has a fan base over 25 million subscribers over मतलब these 150 properties. So what is the most important thing that you think कि आपके content में होनी चाहिए जिससे हमारी audience engaged रहे? देखो, ये जैसे जैसे हमने काम शुरू किया हमने वैसे वैसे इसको सीखा. पहले ऐसा लगता था न्यूज़ एक कंटेंट है, ठीक है, न्यूज़ पे काम शुरू किया, साथ साथ में लर्न किया, देखा न्यूज़ एक कैटेगरी देखती है, तो एंटरटेनमेंट अगेन एक कंटेंट है, तो एंटरटेनमेंट का एक पेज बनाया, वो शुरू किया, वो चल रहा है, बहुत अच्छा चैनल चल रहा है. आपने यहाँ पे डिवाइन टेल्स सुना होगा, द नॉलेज फैक्ट्री सुना होगा आपने, मतलब हो सकता है सोशल मीडिया पे. तो ऐसे कुछ पेजेस हैं जो हमारे 10-10 मिलियन 5-5 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं. बड़े सीक्रेटिव पेजेस हैं, हम किसी को बताते नहीं है, हमारे हैं, तो मैं सारे नहीं बताऊंगा. बट यस, अप्रॉक्सीमेटली 20 कैटेगरीज में वी हैव पेजेस. सो 20 कैटेगरीज मींस 20 वी आर वी आर केटरिंग, वी आर ट्राइंग टू कैटर मल्टीपल कैटेगरीज. अभी फैशन पे आने वाले हम जल्दी. ठीक है. Good. Thank you so much everyone. You have been a lovely panel.